Hello students, this is my final video of chapter Living World of class 11th. First, I will explain you few points which were covered in the previous lectures. That growth, reproduction and self-consciousness are not defining features of living organisms. Metabolism, cellular organization and consciousness are defining features of living organisms. Underlying interactions between cells or tissues lead to emergent properties. Living organisms are self replicating, self regulating, evolving, having interactive system, and capable of responding to external stimulus. Now, next, we'll study about classification and nomenclature of organisms. There are about 1.7 to 1.8 million species. Now, one term that we are very commonly using, that is biodiversity. It is the number of types of organisms present on Earth. Now, if we have to check about the naming of the organisms, हम साइंटिफिक नेम भी लेते हैं और कुछ लोकल नेम्स भी होते हैं. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कैलोट्रोपिस की, जिसका लोकल नेम अक है. अक इज द कॉमन नेम एंड वर्नैकुलर नेम, और that is not universally accepted. So there is a process of naming of organisms and species which is known as nomenclature, and that mechanism or process is universally accepted because it is easy to communicate. To describe the nomenclature, we have to identify and classify the species. So authorities which give names to plants and animals, they are ICBN is International Code for Botanical Nomenclature, and ICZN is International Code of Zoological Nomenclature. Now, how to actually naming is done? So if we are saying that binomial nomenclature is there, and this was given by Carlos Linnaeus. Now, bi means two nominal terms. So two terms we are using for naming. इस यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. एक्चुअली ये जो साइंटिस्ट है जिसने ये बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर बताया था, उनका एक्चुअल नेम है कार्ल वैन लिन. 3 टर्म्स आती हैं उनमें, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया जब बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का फाइंड आउट किया. सो कार्ल्स लीनियस इज एक्चुअली फाउंडर ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर. फॉर एग्जांपल्स, मैंगो scientific name is Mangifera indica. So scientific names are always derived from Latin. Why we are using Latin language? Because it is a dead language. Dead language means which cannot be changed. So scholars, they are mostly using this language. The scientific names, when these are written in italics, that is in print form, and if we are doing handwriting written form, then we have to underline both the terms separately. First name is genus with capital first alphabet, and second name is species and its first alphabet is in a lowercase. आपने ये सारा कुछ actually about the binomial nomenclature you have already read in class 9th. अच्छा, sometimes what happened that author's name is also written at the end. जैसे मैंजीफिरा इंडिका है, इसके पीछे लिनियस जो है वो नेम ऑफ साइंटिस्ट है, तो जो ऑथर का नाम है उसको रोमन में लिखा जाता है in that case. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब भी देखो हमने बोला नेमिंग तो करना, नेमिंग से पहले हमें फीचर्स पता होने चाहिए, जो सिमिलर फीचर्स हो या डिसिमिलर फीचर हो, उसके अकॉर्डिंगली उनको डिफरेंट ग्रुप्स में और कैटेगरीज में रखा जाता है. सो ग्रुपिंग इनटू इजी कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, फिनोटिपिकली एक्सटर्नली जो आप देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जिन कैरेक्टर्स को, उस ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन कहते हैं. Now, taxa is a scientific word which is used for every category. Now, there are 7 obligatory categories that are important categories: species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. So, here every category is called taxa. अच्छा, NCERT में एक statement है कि taxa indicate categories at different level. डिफरेंट लेवल्स मीन्स कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स हैं. स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है, सारी कैटेगरी जितनी भी है, स्पीशीज इज अ टैक्सा, सो दिस कैटेगरी इज अ टैक्सा. So similarly, genus is taxa, family is taxa, all different types of categories, they are termed as taxa. Next comes about taxonomy. Now taxonomy क्या होता है? Where living organisms, they can be classified into various taxa.
again on the basis of observable characteristics. But what is the basis of taxonomy? First of all, characterization. पहले उनके characterization और observable features हम देखते हैं. Then identification, then classification and followed by nomenclature. Features देख के उनको identify करना, उसके accordingly similar है कि dissimilar features है उसके accordingly उनकी grouping करना और classify करना, finally naming करना through nomenclature. ना मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो होता है उसमें कुछ और फीचर्स भी हैं जो स्टडी करते हैं, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. पहले क्या होता था, जो भी क्लासिफिकेशन होती थी हम यूसेज देखते थे कि इसका क्या यूज है. ह्यूमंस दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट द सराउंडिंग्स. तो डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज ऑफ ऑर्गेनिज्म कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है ये किस पर्पस के लिए काम आएगा, और जैसे बाहर ढोने के लिए काम आएगा या इससे एग्रीकल्चर करवाया जा सकता है या डोमेस्टिकेशन करवाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली पहले क्लासिफिकेशन किया जाता था. लेकिन after that, with the invent of systematics is the systematic arrangement of organisms, and it is also based on all four characteristics like characterization, identification, classification, nomenclature, as well as evolutionary relationships also. Now all the taxonomic categories here, they have four main features. Number one, we are classifying them on the basis of hierarchy. Secondly, every category is a unit of classification. Or next, every category we can know about from the knowledge of characters. And characters we can easily observe by studying their similarities and differences. So same thing is written here where we can find out that what is the hierarchy order of different categories, that is species followed by genus, then family, order, class, phylum for animals and division for plants, and kingdom. First thing, which is the first category or first taxa is species. ना जैसे जैसे हायरार्की लेवल बढ़ता जाएगा, स्पीशीज जो हैं, जो कैटेगरीज हैं या टेक्सा है, उनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे. स्पीशीज जो फर्स्ट लेवल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर हैविंग फंडामेंटल सिमिलर स्ट्रक्चर्स और सिमिलर फीचर्स, और because they are similar so they can easily reproduce among themselves. So distinct morphological differences is there between two closely related species. तो यहाँ आपको टू एग्जाम्पल्स लर्न करनी है, टू फ्रॉम एनिमल्स, टू फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स में अगर हम लेते हैं कि टाइगर और लियो दोनों का पैंथरा है जीनस, पैंथरा टिग्रिस एंड पैंथरा लियो. सो टिग्रिस एंड लियो, these are actually two different species. Solanum tuberosum, here Solanum nigrum. So here tuberosum and nigrum, these are two species and Solanum is the genus. Next comes about the another category, that is another taxa is genus, where genera are aggregates of closely related species. So we have already done Panthera leo and tigris. So Panthera pardus is also leopard. So Panthera is here genus. Similarly, potato, and if we are having brinjal, Solanum tuberosum and Melanogena. So Solanum is the genus. Next comes family. Family, it has a group of related genera. So first species, then genera, now families. Species में similar organisms थे, genera में similar species थी, family में similar group of genera होंगे और उसमें less number of similarities होती हैं. और जैसे Solanaceae अगर family है तो इसके अंदर 3 तरह के genera है, Solanum, Petunia and धतूरा. Similarly Felidae में पैंथरा जो है वो लॉयन और टाइगर और लेपर्ड्स आते हैं जिसके अंदर, और फैलिस जिसमें कैट होता है. सो फैलिस और पैंथरा दोनों जेनरा फॉल करते हैं फेलिडी फैमिली में. नेक्स्ट इज ऑटर, assemblage of families which exhibit few similar characters. So similar characters will be less in number जैसे जैसे हायरार्की लेवल बढ़ता जाएगा. अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो कॉन्वॉल्व्यूलेसी एंड सोलेनेसी दोनों फैमिली बिलोंग करते हैं पॉलीमोनियल्स ऑर्डर को. और एनिमल्स में फैलिडी एंड कैनिडी, फैलिडी होगी जो कैट वाला हो गया, कैनिडी जिसमें कैनाइंस होता है जैसे डॉग, तो दोनों बिलोंग करते हैं ऑर्डर कार्निवोरा को. नेक्स्ट कम्स अबाउट क्लास.
सो इट इंक्लूड्स ऑल रिलेटेड ऑर्डर्स। पहले स्पीशीज आया, फिर जीनस आया, फिर फैमिली आया, फिर ऑर्डर आया, नाउ क्लास। सो रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं क्लास। लाइक मैमेलिया है जो इंक्लूड करता है कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। Then similarly in case of plants, dicots are there which include polymonales and spindales. Last one is phylum and division, which include classes with very few similarities. Like phylum chordata include fish, amphibia, reptilia, aves and mammalia due to common features. So, because of presence of notochord and dorsal hollow neural system. Similarly, in case of plants, angiospermy includes dicotyledons as well as monocotyledons. Then there are taxonomic aids. With the help of taxonomic aids, we can study about different types of species of plants, animals, and other organisms, bioresources, and diversity. Now, if we have to classify or identify, first of all, we need to collect the specimens of plants and animals, and then we should have training of systematics, how to gather, store, and preserve these organisms for future studies. So there are actually four types of taxonomic aids: herbarium, botanical garden, museum, and zoological park. First comes herbarium. As we all know, here dried plant specimens they are pressed and preserved in the herbarium sheet, where name, label, place of collection, local botanical name, family and collector names is written. Second, botanical garden, where live species they are actually grown, and वहाँ पे different different categories में उनको grow किया जाता है. वहाँ पे भी उनकी बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम और फैमिली के साथ लेबलिंग की जाती है. म्यूजियम्स में ही जैसे प्लांट्स को था, ऐसे सिमिलरली म्यूजियम में प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस को फॉर्मेलिन में रखते हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसको कंटेनर्स में रखा जाता है. ड्राई स्पेसिमेंस भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, और इंसेक्ट्स को बॉक्सेस में रखा जाता है किलिंग और पिनिंग करके. सिमिलरली लार्जर एनिमल्स दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. We have also seen skeletons of animals in the educational institutes. Then comes zoological park. Zoological parks are the places where wild animals are kept in protection under human care, where they learn food habits. We can learn their food habits and their social behavior. And conditions are provided to animals as their natural habitat. Last thing is very, very important from examination point of view is key. Key is another taxonomical aid for identification of plants and animals which are based on similarities and dissimilarities. Because हमें contrasting character को जब लेते हैं वो पेयर में होता है, उसको हम बोलते हैं couplet. अब इस पेयर में two choices है. The first one is accepting, the another one is the rejecting. So each statement is known as lead. Then separate taxonomic keys जो होती हैं वो एक्चुअली एनालिटिकल इन नेचर है. इसको हम इजीली इस एग्जांपल से आपको दिखा सकते हैं. जैसे अगर हम लिखते हैं हमारे पास कपलेट में आपके पास फीचर में है ड्राई स्किन. सो अगर आप कपलेट में देखते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म की ड्राई स्किन नहीं है, सैलमेंडर. जिसकी है जैसे लिजर्ड है. फिर उसके ऊपर हेयर, लिजर्ड में हेयर नहीं है तो हेयर टाइगर और गोरिल्ला और ह्यूमन बीइंग में है. अगर हम नेक्स्ट कपलेट ऑब्जर्व ओपोजेबल थम्स लेते हैं तो ऑपोजेबल थम्स जो हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन टाइगर बट प्रेजेंट इन गोरिल्ला. लेकिन अगर आप उसको बायपेटल देखते हैं कि दोनों पैरों से चलता है तो गोरिल्ला नहीं चलता है, ह्यूमन बींग्स चलते हैं. सो ऐसे करके हम कंट्रास्टिंग फीचर से ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज और कंट्रास्टिंग फीचर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली और इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को. सो स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट लिया था बिकॉज 2020 में क्लास 11th में ये वाला कंटेंट जो है वो डिलीट हो गया है. और बट इसको मैंने इसलिए लिया है बिकॉज जो नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स आएंगे 11th में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, उन सब में इस क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है. सो अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे मेल आईडी पे उसको क्वेरीज को भेज सकते हैं. In coming time, we will discuss about HOTS and other questions which are related to this chapter. Thank you so much.